Hello everyone, welcome back again. My name is V. Swarnalakshmi. I am an intern at Intellify. I am a student of first year from Electrical and Electronics Engineering Department from Savita School of Engineering, Chennai. In our last video, we saw about neutralization reactions. Today, we will be studying the last topic of the unit, acids, bases and salts. It is neutralization in everyday life. Everything that is present in the world of chemistry has a everyday life meaning. It means that whatever we study in chemistry is somewhere related to our real life. It's practical as well as imaginary but applicable to our lives only. So come on with me. Let's go visually analyze what is the use and what is the value of neutralization in our own lives and explore this beautiful world of chemistry. Here we go. So, in the last topic, we saw about neutralization. As I told you that neutralization is a reaction between acids and bases. So, I would like to just recall a bit. Acids and bases react with each other to form salt and water. Neutralization reaction is exothermic in nature. So, since it is the reaction between acid and base, there are many real life examples where acids react with base in order to neutralize its own self. Since you all know that, I have told you our stomach contains a very strong acid called as hydrochloric acid. Sometimes during the fast time, fast means जब मम्मी पापा या हम लोग फास्ट रखते हैं, उपवास रखते हैं, तब अक्सर क्या होता है कि हमारे स्टमक में जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, इसका कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल से बढ़ जाता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मेन काम क्या होता है? फूड को डाइजेस्ट करना. अगर कोई फूड का इंटेक ही नहीं होगा तो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रेजेंस बढ़ता ही रहेगा. इसलिए क्या होता है कि जैसे ही हम सपोज 8 आवर्स के बाद या 10 आवर्स के बाद कुछ भी इनटेक करने जाते हैं फॉर इन ऑर्डर टू ब्रेक आवर फास्ट, इट हैपेंस दैट वी गेट द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी, विच मीन्स द इनर लाइनिंग ऑफ आवर स्टमक स्टार्ट्स, जलन वाली एक सेंसेशन आने लगती है, इट स्टार्ट्स बर्निंग. सो व्हाट टू डू इन सच अ केस? This situation is called as indigestion. So what are you supposed to do if you suffer from such type of indigestion is that take any sort of antacids. Antacids means anti-acids. Anti-acid means bases. Which type of base? The type of base which is normally suggested is nothing but milk of magnesia. If you recall, in the last 2 videos I have told you that milk of magnesia is nothing but magnesium hydroxide. So what will happen right over here is hydrochloric acid in our stomach will react with the magnesia, milk of magnesia that we are intaking. In order, the acid and base reaction will take place inside our stomach so that it neutralizes each other and the product formed will be just a beautiful relief in our stomach. Hope you are clear with the concept of indigestion. This is one of the applications of neutralization reactions in our daily life. Let's see more and definitely I hope you will be enjoying with it. Second one, ant sting. पहला वीडियो याद है जब हमने आपको फॉर्मिक एसिड से इंट्रोड्यूस कराया था when I was speaking about formic acid, different types of acid. If you don't recall, just go and watch that video again if you want to just clear the concept of acids and bases right over there. So ant sting मैंने बताया था कि जब चींटी काटती है तो वो एक तरह का एसिड हमारे बॉडी में रिलीज करती है. वो एसिड होता है फॉर्मिक एसिड. सिंस ये एसिडिक होता है इसलिए हमें खुजलाहट, जलन का सेंसेशन अपने स्किन पर महसूस होने लगता है. जब भी कभी ऐसा हो या जब भी कभी मधुमक्खी काट ले, चींटी काट ले या कोई भी ऐसा प्राणी काट ले जिसके काटने से हमारी बॉडी में किसी भी तरह का एसिड मिलता है, उस वक्त क्या करना चाहिए? हमें अपने स्किन को मॉइस्ट बेकिंग सोडा से रब कर देना चाहिए. अब मॉइस्ट बेकिंग सोडा होता क्या है? मॉइस्ट बेकिंग सोडा इज नथिंग बट बेसिक इन नेचर. हाउ कम? बिकॉज मॉइस्ट बेकिंग सोडा इज नथिंग बट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. This is one of the best bases which you can use in order to get instant relief from ant stings or
honey bee stings. The another thing which I will suggest is also calamine solution. This contains zinc carbonate. Both zinc carbonate as well as sodium hydrogen carbonate are basic in nature. Therefore, the acidic sting which we have got, it reduces the effect of acidic sting. Rather, there takes an acid base reaction again, and thus we get instant relief. So what was the first point? The first point was neutralization in everyday life is first of all used when we suffer from the problem of indigestion. The second thing is when we get ant sting, or if someone is suffering from ant sting or honeybee sting, immediate effect can be done by the baking soda present in the home or the calamine solution. The third one is nothing but the soil treatment. The last two one, be it the ant sting or the indigestion, this is for the human purpose. That means it is applicable in all our lives. The next one that I would like to talk about is for the environment. What happens when farmers continuously use pesticides on their farmland? जब बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड का यूज़ बढ़ जाता है तो अक्सर जो सॉइल होती है, जो ज़मीन होती है, उसके ऊपर एक एसिड की लेयर बिछ जाती है. अब जैसे अगर आप अपने बालों को कंटिन्यूसली कोई ना कोई एसिडिक सॉल्यूशन के साथ कंटिन्यूसली उसको ट्रीट करते रहेंगे तो कुछ दिनों के बाद आपके बाल झड़ने लग जाएंगे. उसी तरह एसिडिक ज़मीन पे, एसिडिक कंटिन्यूस एसिड छिड़के हुए ज़मीन पे कभी भी प्लांट्स नहीं उग सकते. Therefore, what people do is that excessive use of chemical fertilizers make the soil acidic in nature. And plants do not grow when the soil is either too acidic or too basic in nature. So what do people do is, what do farmers do is that when the soil is too acidic in nature, it is treated with quicklime. Quicklime is nothing but calcium oxide or slaked lime. Slaked lime means calcium hydroxide. So what happens over here is the acidic soil which has taken place due to continuous effect of acids is reacted with calcium hydroxide or calcium oxide, which is basic in nature. Neutralization reaction takes place between both of them, thus neutralizing the effect and making soil perfect for plant growth again. इफ़ द सॉइल इज़ टू बेसिक, तब क्या किया जाए? अगर सॉइल बहुत ज़्यादा बेसिक है तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर मिला दिया जाए. ऑर्गेनिक मैटर से मेरा मतलब है कि जो झड़ी हुई पत्तियां रहती है, जो हमारा ऑर्गेनिक कंपोस्ट होता है, जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक चीज़ें अवेलेबल है, जैसे फ्रूट्स की छाल हो गई या वेजिटेबल्स के पील ऑफ्स हो गए, उनको एक जगह पे जमा कर दिया, ऑर्गेनिक मैन्योर हो गया. इन सब को डालने से जो अगर सॉइल बेसिक है तो उसका एसिडिक में कैसे लाया जाता है, ये सारे इसमें कोई ना कोई तरह का एसिड प्रेजेंट होता है. सो व्हाट हैपन्स इज दैट ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड विच न्यूट्रलाइजेज द एसिड बेस इफेक्ट and thus enhancing the nature of the soil. So this was the third point which is very important to be noted down over here. The next is the factory waste. Everyone knows that factory releases many kinds of wastes, but in order to not pollute our environment, they do not take the precautionary steps because of which our river bodies become very very dirty into nature, and therefore all the marine life, all the aquatic life gets affected. See students, हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है. अगर आप बोलते हो कि फैक्ट्री वेस्ट रिलीज कर रही है तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो ये फैक्ट्री से वेस्ट रिलीज आउट हो रहा है वो किसी एक को नहीं, हम सबके लिए नुकसानदायी है. कैसे, मैं बताती हूँ. फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलता है, चाहे वो रिवर बॉडीज़ में जाए, चाहे वो हमारे वातावरण में ही क्यों ना घुल जाए, whether it goes into river bodies or in our air itself, what happens over there is जब वो वाटर बॉडीज़ में मिल जाता है तब अक्सर ये होता है कि वही रिवर्स का पानी हमारे वेरियस एग्रीकल्चरल फार्म्स में जाता है. जब वो हमारे वेरियस एग्रीकल्चरल फार्म्स में जाता है, वहाँ पे जो पेड़ है, वहाँ पे जो पौधे उग रहे हैं, हो सकता है वो किसी तरह का अनाज हो सकता है वो किसी तरीके का पल्सेस हो सकता है वो कोई स्पाइसेस हो. ये सारे केमिकल्स सॉइल के थ्रू उन प्लांट्स तक भी पहुँच जाते हैं. अल्टीमेटली जब वो प्लांट्स की फार्मिंग तो अफेक्ट होती ही है, हो सकता है पेड़ सारे मर जाए, मगर अगर वो पेड़ जिंदा रहते हैं उन कंडीशंस में भी, जो हम तक जो प्रोडक्ट आता है, हम तक जो फार्मफुल प्रोडक्ट आता है, जो हमें प्योर लगता है, वो प्योर तो रहता ही नहीं है. क्योंकि
ये जो पानी उनको मिला है, ये कौन सा पानी, ये फैक्ट्री वेस्ट का मिला हुआ वाटर है. Therefore, it's very difficult to know whether something is really useful to us or something is not. On top of that, if you go ahead seeing into aquatic life, you will find that जब ये वेस्ट हमारे फैक्ट्री वेस्ट रिवर बॉडीज में मिलते हैं, तब हमारे जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके लिए बहुत बहुत बड़ा खतरा हो सकता है. आपको पता है रिवर गंगा में इट वाज सेड दैट देयर वर डॉल्फिन्स एट अ टाइम, बट नाउ दे आर देयर और दे आर नॉट देयर. I'm unable to have this information with me till now, but the fact is that we have polluted our river bodies so much that still we are unable to recover the actual pH value of them, making them very acidic in nature or very basic in nature, unfit for human utilization. So it's not that the factory owners or the factory workers cannot have any solution for this problem, because since they know that suppose they are having a cloth industry or a cloth manufacturing, they know that the waste which is going to come out is acidic in nature. So surely they can treat it with a base in order to neutralize the effect. It is possible that they may get some sort of very valuable product which could be valuable for their own production, it seems. So what is over here is acid effluent from factories is treated with lime, calcium oxide before discharge. Acidic gases such as sulfur dioxide emitted by power stations and industries are neutralized by calcium oxide before the gas is discharged into the air. Ammonia prevents the coagulation of latex by neutralizing the acid produced by bacteria in the latex. I have mentioned very few steps that can be taken in order to avoid polluting our nature, but there are many others which are continuously been taking place at the factory level itself, but it can be surely be done that this step is taken on a huge basis so that we may protect our mother earth. So what could be the practical relevance of all these concepts that we have been talking of till now? See students, like I said in the first video lecture itself, that chemistry is a very magical world. It has many uses. So one of the practical relevance of the neutralization is that as soon as you get up in the morning, if you are not a bed tea drinker, you would be first going and doing brush. So this is about toothpaste itself. Science is a world of surprises and chemistry is just another synonym of it. Toothpaste contains bases that neutralize the acid produced by the bacteria in our mouth. Baking powder is usually used to help the cake rise. You would have seen that when in the kitchen mom makes cakes, she generally pours some amount of baking powder into it. ये baking powder करता क्या है? ये baking powder actually जो हमारी ईस्ट प्रेजेंट होते हैं उनकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है, ताकि हमारा जो केक बने तो वो केक स्पॉन्जी और अच्छा मोटा मोटा बने, ताकि खाने में भी मज़ा आए. अब जो लास्ट प्रैक्टिकल रेलेवेंस हम बता रहे हैं इसका, वो ये है कि आफ्टर टेकिंग अ हेड बाथ, वी जनरली, इफ़ यू हैव लॉन्ग हेयर्स, you generally use conditioners. What does this conditioner do is conditioner is used with shampoo to prevent small scales of hair which make your hair unmanageable. If you're having unmanageable hair, generally this conditioner helps you to get rid of it so that your hairs look really smooth in texture and straight, and you can avoid problems like split ends and all. So at last I would like to leave you with a have you ever thought question, that is of DNA. Do you know what is DNA? DNA is nothing but डाईऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. डीएनए होता क्या है ये भी बता देती हूँ. जनरली हमारे बॉडी की हर सेल हमारे माता पिता से दी हुई है, मगर आप अगर ये सोचेंगे कि हर सेल दी हुई है, इसका मतलब क्या है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जनरली हमारे जो जीन्स होते हैं वो मिलते हैं. जीन्स क्या होते हैं? जीन्स हमारी बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है जो हमें ये बताती है कि हम अपने माता पिता के रिजेम्बलेंस है. तो अक्सर ये डीएनए हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट होता है, हर सेल का, हर एक इंसान का यूनिक होता है, यूनिक प्रॉपर्टी होती है.
डीएनए हमारी बॉडी की हर फीचर को कंट्रोल करता है, चाहे वो हमारी आँख का कलर हो, हमारी हाइट हो, हमारी बॉडी वेट हो, हमारा कुछ भी हो। आपने देखा होगा कि अगर सपोज़ आपकी फैमिली में सपोज़ हार्ट अटैक की अगर डिसीज़ आपके परदादाओं के ज़माने से चलती आ रही है, इट इज़ पॉसिबल कि जो आपकी जनरेशन है वो तब तक वैसी की वैसी ही हो। तो आप अगर ये बात सोच सकते हैं कि वो आपके परदादाओं से आपके दादा में, फिर आपके पापा, ऐसे अगर ट्रांसफ़र होते हुए क्यों आ रहा है, उसका रीज़न यही है कि आपका डीएनए, आपका जीन्स मैच करता है। दूसरा एग्जांपल दूंगी, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आपके पापा के अगर राइट हैंड में एक तिल है, तिल मोल है, तो हो सकता है आपके भी राइट हैंड में एक मोल हो। या फिर अगर आपने अपने दादाजी की आंखें नोटिस की होंगी, अगर वो ब्राउन कलर की है तो पॉसिबली आपके पापा की भी ब्राउन कलर की होंगी, आपकी भी ब्राउन कलर की होंगी। दिस इज व्हाट द रिजेम्बलेंस ऑफ डीएनए शोज लाइक, एंड दिस इज एन एसिड बिकॉज डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आप इसके बारे में डिटेल में अपनी आगे जाने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। और अब मैं होप करती हूँ, आशा करती हूँ that you would have understood this complete chapter of acids, bases and salts. If there is any single doubt that you are facing with in this chapter, please let me know. I will surely clear it out. With this, I would like to say I will be back with the next chapter, physical and chemical changes. Till that, stay safe, stay at home, keep learning. Thank you so much.